Hello everyone. Today our next problem is exercise 1.3, question number 5. Beta, please read the question. Question 5. What can the maximum number of digits be in repeating block of digits in the decimal expansion of 1 upon 17? Perform the division to check your answer. 1 upon 17 को आपको करना and perform the check your answer. So in this type of problem, simply you divide it 1 by 17. Now problem is up to which decimal place we continually divide it. So for this concept, it divided it, and finally it comes the repeating the above steps. Then we stop it. This is the method to divide the maximum number, and the maximum number of digit in the repeating block is always less than the denominator value. But it's always less than 17. Let's say maybe 16, 15, and like that. But it is not possible greater than the number of denominator. Number at the denominator. So 1 divided by 17. 1 is less than to 17. So here you mark 0. Then we mark here point. And when we mark point here, then again here 0. Now it's become 10. 10 divided by 17 again is not possible because 17 is greater than 10. Then again write down 0 10. here and 0 here. So it become now 100. अब बताइए कितनी बार जाएगा 100 के लिए डिवाइड करें तो how many times? 5 times. So 5. You write down 5 and 17 5s are 85. So here you write down 85. Then subtract it. What you will get? 15. Then mark 0. A 150. How many times? 8 times. 8 7 are 136. 17 into 8 is 136. 150 minus 136 is 14. It's okay. Then again, अब कितनी बार जाएगा 0.58 again 8 yeah 0 and again 8. So 136. Here you write down 8. Again balance 4. Now 0. 17 to ja 34. Then 6. अब मैं यहाँ कर रहा हूँ आगे इधर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 6 then 0. तो कितनी बार 5882 तो हो गया अब 3 times 3. 73 ja 51. Now become 9. 90. अब कितनी बार जाएगा 5 times 5. 15. Sorry 5. अब करते हो आंसर बताओ 3 5 2 34 16 160. अब 153 हो जाएगा 2 के बाद 9 153. कितने बच गए 7. अब मैं यहाँ कर देता हूँ इसको आगे 7 0 4 9 के बाद 4 4 4
बच गए दो, बैलेंस दो। नाउ अगेन 21 बच गए 3 3। अब अगेन 1, आपके कितने बच जाएंगे? 13 13 13, 4 1 1 हो गए 13। अब 7, अब 7, अब कितने हो गए? 1 1 1 7 1 second 10 में 2 गए 1, 2 में से गया 1, 0 1 1 0। कितनी बार हो जाएगा? 6 7 6 6 1 बुनियादी, 0 6 2 7 42, 6 कम 6 4 10, बच गए 8, 8 बैलेंस। बताओ 4 4 12 और 120, तो 7 बार। 6 7 अब जाएगा नहीं, 1 बच गया आपके पास। ठीक है, अब बैलेंस लास्ट में क्या आ गया? 1, यहां तक कर लिया। हाँ अब 1 आ गया, अब 0 लगाएंगे। हाँ अब 0 लगाएंगे तो 0 होगा, फिर वापस 100 आ जाएगा। तो अब क्या होंगे वो वैल्यूज? रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी, वापस 100 आ जाएगा ना। तो क्वेश्चन बन गया नहीं वापस 100। तो अब ये गिन लो कितनी डिजिट है, ये 16 होंगी। काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हो गई कि नहीं हो गई? एक सेकंड सर काउंट कर लो अगेन। सेवेंटीन आ रही है कहाँ आएगी देखो? 0 5, हाँ बोलो हाँ 8 8 2 बार। 0 हाँ हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। हाँ 8 8 2 हम्म 3 हम्म 5 2 हम्म हम्म 9 हम्म 4 1 1 7 6 0 4 जीरो 7 जीरो कहाँ है? 6 के बाद डायरेक्ट 4 है। जीरो कैसे है बीच ओ में? हाँ तो 16 हो गया। हाँ हाँ तो लेस देन 17 हो गई हाँ 16। तो आप लैंग्वेज लिख दो लास्ट में। द मैक्सिमम यस लिख लो, नोट डाउन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स in the repeating block, in the repeating block
is 16 less than 17. Hence division gives 1/17 इक्वल टू, ये कंप्लीट लिख के बार लगा दो, 0.588235, कंप्लीट लिख दो, 0.58823529411764 और ये 16 हो गई। Pretty long. और इसे लिख दो, द रिपीटिंग ब्लॉक हैज, नोट डाउन आगे, द रिपीटिंग ब्लॉक हैज 16 digits. This question is over. Question number 5. Now we will discuss question number 7. मैं recording हाँ. Okay. Now next question. Question number 8. What is it? Please read. Question number 8 of exercise Find three 1.3. Yes. Question number 8. Find three different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11. 5/7 and 9/11. Our aim is to find out, क्या निकालना है हमें? Three different irrational numbers between 5/7 and 9/11. So for this, first we have to divide 5 by 7. क्या करना है आपको? Divide 5 by 7. 0.77 जा 49, एक बचा 0, 7 बन जा 7, 1 आ जाएगा आपका, 3 बच जाएंगे, 7 4 जा 28, 2 बच गए, 7 2 जा 14, 6 बच गए आपके पास, अब कितना आएगा? 8 8, वेरी गुड, 56, फिर 5 5, अब 7. रिपीट हो गए ना? Now it's repeating. Yes, हो it's गया? repeating. ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया, तो we can say therefore 5/7 is equal to 0.714285. 714,285. सिमिलरली अब 9/11 करके बताओ, आप लोग करिए कॉपी में फटाफट। 0.81 bar. यहाँ लगेगा 0, 88, 2, 11, बस हो गया, एंड वी कैन से 0.81 bar. 0.81 बार, 9/11 is equal to 0.81 बार, राइट? ये बार हो जाएगा और ये भी बार। कोई दिक्कत यहाँ तक? No. तो अब आपको कितने नंबर लिखने बीच में? 3. 3। तो इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, तो लिख लो, लैंग्वेज लिखो इसके बाद, there are an infinite number of irrational number
irrational number between these two numbers 5 by 7 and 9 by 11. We can choose any three numbers. These from them, okay? You can choose any number. तो देखो यहाँ से start करिए 7 1 से. तो 7 1 change this 5 3 up to 80009. मतलब up to 8009 so many numbers. आप कुछ भी लिख सकते हैं. Yes. 0.74234 तीन 6 डिजिट तक करो 2 हो गया. एक बना लो 0.800001. इन दोनों के बीच का भी लिख सकते हैं. इसके पहले का लिखो 0.732 बन गया. ओके तो सारे वैल्यूज सही है. ऑल आंसर्स आर करेक्ट. ओके so you can write any 3 or 4 whatever you are between these two numbers. It is infinite in numbers. Thank you. Hello student. Now one question. If 5 plus 2 root 3 upon 7 plus 4 root 3 is equal to a plus b root 3, then calculate or find out the value of a and b. Yeah, what is the value of a? This is your NTSC exam problems. It comes out in the NTSC competition. किसी में भी आता है. NTSC question based on your exercise 1.3. So to calculate value of a and b, first we have to rationalize the LHS. So to rationalize this, so solution we can say we have 5 plus 2 root 3 upon 7 plus 4 root 3 is equal to a plus b root 3. And for the rationalization of the number, multiplying and divide by opposite sign of the denominator. So here denominator is 7 plus 4 root 3. So we have to multiply LHS of this expression by 7 minus 4 root 3 upon and also divide by 7 minus 4 root 3. Minus 4 root 3. Multiplying and divide by the opposite sign of this denominator. And right hand side is as it is, a plus b root 3. Now simplify it. 5 multiplied by 7, 35. Then 5 multiplied by minus 4, 20. And root 3 is here to 20 root 3. Then 2 root 3 multiplied by 7, 7 to the 14, 14 root 3. Plus minus, minus 2 multiplied by 4, 8 root 3 into root 3. And a plus b into a minus b is a square minus b square. You can say since a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. Use this identity here, denominator. So this is 7 square minus 4 root 3 whole square is equal to a plus b upon root 3. Now, again simplify this. So 35 and 8 multiplied by root 3 into root 3, 24. So 35 minus 24 is become 11. And minus 20 root 3 plus 14 root 3, it's become minus 6 root 3. 11 minus 6 root 3 is equal to a plus b root 3. Comparing both the sides, here coefficient of root 3 is 6 minus 6, and here coefficient of root 3 is b.
So value of B is -6 and A in place of A is here, so A is equal to 11. So we can say this implies A is equal to 11, B is equal to and B is equals to -6. -6. This is the our answer. आपकी कोई भी प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए and share and subscribe my channel and please like it also. Thank you.